Hi everyone, how are you? This is Rana sir. Welcome to our Rana sir educational channel. Today I will talk on a topic whose name is set theory, that is also called in Hindi Samuchya Siddhant. Now in this topic I will explain its concept and also I will apply this concept in numerical. So you concentrate here to understand its concept in detail and simultaneously you like this live video and also you share this live video with your colleagues, friends and students so that they can also update their knowledge on this topic. Okay, now one additional information I am going to tell you and you have to follow it positively, and then you have to write all data which are available on the blackboard. First of all you have to take one notebook and one pen and then you have to sit at your location properly, positively and safely to write all data which are available on the blackboard and also those data which are spoken by me. Okay students, so now I am going to solve it and you concentrate here to understand this video. Okay, now one question I am going to explain. With question I will discuss its theory. Write the set, write the roster method and rule method. You write here roster method and rule method. Rule method about the word mathematics. mathematics mathematics. This is a word and you have to write its roster method and also you have to write set in roster method and also in rule method about the word mathematics. Now here I will write as write set in roster method and also in rule method. Write the set in roster method and in rule method of the word mathematics. mathematics. Okay, so you have to write set in roster method and also in rule method. Okay, so you concentrate here. I am going to give its solution. Okay, first of all I have to write a set in roster method and then I will also write set in
rule method. So both method I will give its solution. So first of all, you have to write solution, and after writing solution you have to put here the word I have to write here given that, and then you have to write the word mathematics, word that is available here, mathematics, mathematics. Okay, now here I have to write set in roster method, roster, roster method. In this case I will write, so each term, each alphabet I will write here, but if a single alphabet which will match more than one time, so I will write in one times. It means that here I am looking m. Here I have to write m. So m is here and here. Therefore, in this word there are two m, but I have to write only one, and then I have to put here comma, and then I have to write a. Now a is also available here and also here. So there are two, but I have to write only one. Okay, students. So I have written a, and then I have to put t. T is also available two place, but I have to put one. Similarly, H I have to write, so H is available only one, so I have to put H. E, so in this word I have only E one time, so I have to put E. M, I have written A, I have written, now I have to write here, so I will put here I, and then C I have write one times, and then yes. So this is the set available in roster form. This is a set which is available in roster form, but I have to also write the set of this mathematical words in rule method. Okay, so in rule method I have to write it, so I have to say this is the one answer of the given word. Similarly, I will also write rule method, that is this is the one answer, and here second answer I have to write here rule method. In rule method I have to write it as, see, now I will say rule will be as x such that x. Now mathematics is a word, mathematics is a word, so here I will write mathematics, is a word that is I have written in rule method, that is in niyam medium. Okay, students who are reading in English medium and also in CBSE board, those students can understand its concept in detail, because if any word is given, so we can write its two set. One set will be in roster method and other set will be in rule method. Okay, so rule method is that we have to write x such that x, and word, that is mathematics word. Yeah, mathematics is a word, mathematics is a word means this is a word. Now I will also give the solution of this question in Hindi, so students who are reading in Hindi medium, those students can understand its concept in detail.
यहाँ पर सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी को हिंदी में समुच्चय कहेंगे। नाउ यहाँ पर लिखा गया राइट सेट इन रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड का मीनिंग होता है रोस्टर मेथड का मीनिंग होता है कि उसको जो होता है सूचीबद्ध से लिखना है। सूचीबद्ध, इस रोस्टर को हम सूचीबद्ध भी कहते हैं, इसको हम सूचीबद्ध, इसको हम सूचीबद्ध के नाम से भी जानते हैं, इसको हम सूचीबद्ध कहते हैं। सूची, ये रोस्टर मेथड होता है, सूचीबद्ध होता है। सूचीबद्ध में हम क्या करते हैं, जो भी मैथमेटिक्स वर्ड है, एक शब्द है या कोई भी हम एक वर्ड लेंगे, जैसे कुशीनगर ले ले या दिल्ली ले लिए, चाहे इलाहाबाद ले लिए, तो उस वर्ड को हम लिखेंगे और उस वर्ड में जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे ए से लेकर जेड के तक, तो उसमें जो अल्फ़ाबेट हम यहाँ पर इस नियमविद में लिखेंगे, सूचीबद्ध में लिखेंगे, तो वह एक सिंगल लेटर यहाँ पर लिखेंगे। अगर वह अल्फ़ाबेट इस वर्ड में कहीं भी आया है, एक या एक से ज़्यादा, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर हम देखें मैथमेटिक्स एक वर्ड लिए हैं, इसमें यम यहाँ पर भी है, यम यहाँ पे, यम जो होता है इस वर्ड में जो होता है 2 टाइम्स है, लेकिन हम 1 टाइम्स लिखेंगे। इसी तरीके से हम ए को देख रहे हैं, तो इस मैथमेटिक्स वर्ड में जो होता है 2 बार आया, इसलिए 1 बार लिखेंगे। इसी तरीके से टी भी 2 बार आया, 1 बार लिखेंगे। एच जो होता है 1 बार आया, सिंगल है तो सिंगल लिखेंगे। ई जो होता है 1 बार है तो इसको लिखिए, आई भी 1 बार है तो 1 बार लिखिए, सी भी 1 बार है तो 1 बार लिखिए, एस भी 1 बार है। इसमें अगर कोई वर्ड या कोई वर्ड में नहीं, कोई अल्फ़ाबेट अगर 1 से ज़्यादा बार आता है तो उसको हम एक ही बार काउंट करते हैं। ओके, अगर सिंगल है तो सिंगल उसको हम लिख देते हैं। इस नियम को हम सूचीबद्ध या इंग्लिश में रोस्टर मेथड के नाम से जानते हैं। ओके, तो एक सॉल्यूशन जो होता है इस वर्ड का होगा। दूसरा कहा गया रूल मेथड। रूल मेथड को कहा जाता है नियमविद। इस रूल मेथड को हम कहेंगे नियमविद। दिस इज द नियमविद, नियम विधि, इसको हम नियम विधि के नाम से जानेंगे। दिस इज द नियम विधि। ये नियम विधि होता है या रूल मेथड। इसमें क्या होता है, हम एक्स सच दैट एक्स लिखते हैं। ये जो मैथमेटिक्स वर्ड है एक क्या है, वह एक शब्द है। वर्ड का हिंदी क्या होता है, शब्द। तो मैथमेटिक्स इज ए वर्ड, यहाँ पे ए वर्ड भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इज ए वर्ड, यह एक शब्द है। मैथमेटिक्स क्या है, वह एक शब्द है। शब्द का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई भी वर्ड लिखेंगे, अगर उस वर्ड का मीनिंग कंप्लीट आएगा तो हम कहेंगे वो वर्ड है, अदरवाइज हम कहेंगे वह वर्ड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम वर्ड को कह सकते हैं, जैसे CAT, कैट का एक मीनिंग होता है बिल्ली। कैट का मीनिंग होता है बिल्ली। अगर इसी अल्फ़ाबेट को अगर चेंज कर देते हैं, जैसे सपोज कि ACT लिख दे, तो इसमें जो होता है कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। यहाँ पर एक इसका तो मिल जाता है, सपोज कीजिए यहाँ पर TAC कर दें, तो अल्फ़ाबेट तो वही है ACT, यहाँ पर TAC, तो इससे जो होता है यह भी एक वर्ड के फॉर्म में है, लेकिन यह वर्ड के फॉर्म में कोई क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है, एक क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये जो होता है एक इसका मीनिंग इस कॉम्बिनेशन ऑफ जो अल्फ़ाबेट है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट जो होता है एक स्पष्ट जो होता है मीनिंग दे रहा है। ये कैट होता है, कैट के मीन्स बिल्ली, लेकिन इसी अल्फ़ाबेट को हम इस तरीके से अरेंज कर दिए, टी को पहले किए, उसके बाद ए तब सी,
TAC, लेकिन यह जो होता है एक करेक्ट मीनिंग नहीं देता है, इसलिए हम कहते हैं कि यह वर्ड नहीं है। जो करेक्ट मीनिंग देता है वह वर्ड होता है। तो यहाँ मैथमेटिक्स एक करेक्ट मीनिंग देता है, इसलिए वर्ड कहें कहें इसी को दूसरे फॉर्म में इसी लेटर को हम अरेंज करेंगे तो वह मीनिंग नहीं देगा, इसलिए हम कहेंगे वह वर्ड नहीं है। तो हम कहेंगे दैट इज नॉट ए वर्ड, बट हियर मैथमेटिक्स गिव ए complete sense, so I will say this is a word. Okay, so I hope that you are understanding all these informations clearly. Therefore you like this live video and also you share this live video with your colleagues, friends and students so that they can also update their knowledge on this topic. If you are getting any confusion, so you write your query point on related to this topic and then you send. After sending I will read, that is I will analyze your query and then I will give the appropriate solution of your question in detail. Okay students, so thank you for watching this live video. I will meet with you in next video. Jai Hind, Rana sir.